गए हैं और यहाँ हम हमारे होटल से केवल 10 रुपये में आए हैं रिक्शा से। अभी हम जंपिंग स्पॉट में पहुँचे हैं जहाँ पे से रानी ऑफ झांसी ने अपने बेटे दामोदर राव के साथ जंप किया था 1858 में फ्रीडम स्ट्रगल में, ये फोर्ट से एस्केप करने के लिए। हमारा अगला स्पॉट होने वाला है हैंगिंग स्पॉट। हाउ इज झांसी फोर्ट? Jhansi food is nice. Hello, this is hanging spot, hanging tower. So इधर से छोड़ देते हैं और इधर वो मर जाता है। हैंगिंग स्पॉट के बाद हम आए हैं अमोद गार्डन। ये रानी ऑफ झांसी का गार्डन था, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने इसे एक आर्मरी में कन्वर्ट किया था। इसके बाद हम देखने जाएंगे एक टेम्पल जो रानी ऑफ झांसी विजिट करती थी। टेम्पल के बाद ये लास्ट स्पॉट था बरादरी, जो गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनाया था, जिनको आर्ट्स और ड्रामा पसंद था। उनके लिए उन्होंने एक पवेलियन बना था जहाँ पे ये सब होता था।